I did not come with an attitude ki I have to be an IITian. I came with the attitude of surrender ki I am here to enjoy. Right. In fact, sometimes being an IITian can and does hurt people. अजी मैं क्यों खड़ी खम्मा सा राम राम सा। मेरा नाम सावी है और सीकिंग सॉल्यूशंस विद सावी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कोटा के स्टूडेंट्स, पता नहीं क्यों मुझे इन दिनों लग रहा है कि उनकी लाइफ सच में इतनी आसान नहीं है। इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं और ऊपर से लाइफ के प्रति जो गोल है वो क्या इतना भी क्लियर है। कॉन्वर्सेशंस आगे बढ़ाने की आज कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे गेस्ट के साथ जिनके पास हमारे लिए बहुत कुछ खास होगा। गौरव मिश्रा जी बिल्कुल हमारे साथ में हैं। मैं उनका इंट्रोडक्शन कुछ ऐसे दूंगी कि 20 साल पहले उन्होंने आईआईटी में दाखिला लिया था, बहुत अच्छी तरीके से आईआईटीएन हैं और फिलहाल बाहर रहते हैं। बाहर का अर्थ हो गया अब्रॉड, द यूएस। तो ये मैं डिस्क्रिप्शन इसलिए भी दे रही हूँ क्योंकि शायद हम में से ज़्यादातर लोग यही तो समझते हैं आईआईटीएन हैं तो बढ़िया पैसा कमाएंगे और बाहर रहेंगे तो और बढ़िया। तो करते हैं उन्हीं से बात। गौरव जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं आप सर? मैं ठीक हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट टुडे। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि आपके इस कॉन्वर्सेशन के साथ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सो मेनी आंसर्स जो प्रोबेबली हमारे सामने स्टूडेंट्स जो हैं उनसे रोज़ उन क्वेश्चन से डील कर रहे होते हैं। जैसे मैं ये कहूँगी कि 16-17 साल की उम्र में जो बच्चा कोटा में एटलीस्ट जेई का एग्ज़ाम देने आता है उसके माइंड में ये होता है कि आईआईटीएन बनने के बाद अच्छी सी नौकरी मिलेगी और अगर बाहर सेटल हो पाए तो और अच्छा। अब थैंकफुली अब तो इंडिया में ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं। तो इस बारे में बातचीत करने से पहले मैं ये समझना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में आईआईटी कैसे आई। इनफैक्ट वाज दैट समथिंग दैट यू ऑलरेडी वांटेड इन योर लाइफ? नहीं, तो टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट, नो, आई डिड नॉट ever plan to be in IIT. I did not ever plan to even be an engineer. Okay. I kind of let my parents decide this for me. I personally did not want to come to Kota. Acha. I feared coming to Kota, and I did not want to come to Kota. I also knew when I was in 11th 12th, I also knew that I don't know what is best for me. Right. I don't know what is best for me, so I had like a sense of surrender. That okay, I don't know what is best for me. Maybe my parents do, so I'll let them take this call, and I'll do as they want me to. I personally did not want to come, but I surrendered. कि okay, if you want me to go to Kota and prepare for 1 year, I will do that. तो ये सरेंडर खुशी में था या फिर ओके आधे मन से था? नहीं, because the basis of the surrender was that I don't know what is best for me. That is the fact of the matter. I've made decisions in life which I know I made out of free will, which did not turn out to be good. I've made so many mistakes. I've made so many mistakes in life. I've been so ignorant. So I think there was a degree of understanding that it's a fact of the matter that I don't know what is best for me. My mind may tell me that no, this is better, this is worse, and so on, but that's just a mental chatter. Right. Even my mind does not know. When I was in 11th, what did I know? Very little about the world. Very little about the realities, the cold realities of the world, and very little about myself also. Right. So eventually याद करें तो आप कितने साल के थे when you came to Kota for coaching? So right after 12th. How old are people after 12th? Like I think I was 17. आपका मुझे नहीं पता, तो हाँ similar, right? Right, 18 I think. I was 18 okay. वो वोट देने वाली उम्र में आप आ गए थे। हाँ. तो वैसे समझदार, पर आपने माना कि हाँ शायद आप उतना नहीं जानते थे। Yeah. तो पढ़ाई कैसी रही यहाँ पर? पढ़ाई ठीक रही. I mean, I just followed the coaching curriculum. And I guess I did the best I could. By my mental standards, मुझे ये लगता था कि this is not the best I can. अच्छा. I can do more. But now in hindsight, I think I did the best I could. That's good. Even though at that time I thought I can do better, I can do more.
I judged myself a little too harshly, a little, I had set my standards a little too high, and I judged myself against an imaginary standard that I had set for myself, rather than judging myself against what is actually realistic. ओके, इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट. इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला पॉइंट तो हम स्पेसिफिकली डिस्कस भी करें तो बेहतर, क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है कि मुझे इस लेवल पर जाना है. और क्योंकि स्पेशली मैं कोटा के स्टूडेंट्स की बात करूँ तो माइंड में ये रहता है कि नहीं, हमें ये तो करना ही है. और कई बार जब थोड़ी सिचुएशंस चेंज होती हैं, कुछ ऐसा मतलब डेली चीज़ों में भी चेंज हो जाता है, तो ऑफकोर्स आपकी पढ़ाई का फ्लो वो नहीं रह पाता, एंड यू turn a little harsh to yourself. So is it right? Yeah, I think it's probably human nature. Yeah, we tend to judge ourselves sometimes a bit too harsh, and sometimes a bit too leniently as well. It's very, very hard to be, perfectly balanced. Yeah. Yeah, so I judge myself a bit too harsh on certain things, I believe, but on certain other things where I should be, harsh on myself, I'm very lenient. The beauty of this whole conversation is कि we understand कि हाँ, हम perfect नहीं हैं. Yeah. अच्छा, coming back to our IIT days, मतलब मेरे नहीं, आपके IIT days, तो यहाँ से पढ़ाई जब हुई तो were you sure जिस टाइम मतलब तैयारी कर रहे थे, लग रहा था कि नहीं, I will clear it? In fact, पेरेंट्स का क्या उस दौरान संवाद रहता था? क्योंकि उस वक्त तो 20 साल पहले इतना ज़्यादा मोबाइल्स और का कम्युनिकेशन था नहीं, है ना? क्या पेरेंट्स आपको विज़िट कर पाते थे? इनफैक्ट व्हाट वाज इट जो डिफरेंट था उस वक्त? और डिफरेंट नहीं तो मैं ये कहूँगी कि आपकी लाइफ में जब आप याद करते हैं तो वो जर्नी कैसी थी? Yeah, so just to put the time frames in perspective, मैं 1998 में आया था कोटा टू प्रिपेयर. सो 99 में मेरा एडमिशन हुआ था IIT में. 98 में मैंने एक साल ड्रॉप करके आया था मैं. ओके. So 98 is when I was here, and of course there were no cell phones. Parents used to visit once a month. अच्छा. Or once in 6 weeks, something like that. क्योंकि मैं आज के बच्चों को देखती हूँ कि वो थोड़े से टेंशन में भी होते हैं कि मार्क्स कैसे आ रहे हैं टेस्ट के. उनकी लाइफ के बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे उनको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित भी हो जाते हैं. तो उतनी चिंताएं क्या आपके पास भी थी उस वक्त? नहीं. I think a lot of these worries, they originate from our attitude towards life, towards what we're trying to achieve. I did not come with an attitude ki I have to clear this exam and I have to be an IITian. अच्छा. I came with a sense of surrender ki I am here to do my best. I am here to learn. If nothing else, I will be better at maths and physics and chemistry, right? One year of coaching and problem solving, all of that. If nothing else, I will be better at it. There's nothing to lose, right? I did not come with an attitude ki I have to be an IITian. I came with the attitude of surrender ki I am here to enjoy, learn, train, have fun, do my best. And then this is not life. IIT is not life. Well, ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी है, क्योंकि मैं अक्सर जब बच्चों से मिल रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके माइंड में एक गोल है, और जो गोल वैलिड भी है कि हाँ, मुझे IITian बनना है या फिर डॉक्टर बनना है या फिर एक ऐसा कॉलेज लेना है जो हमें एक बहुत स्टेबल लाइफ फ्यूचर में देगा, राइट? ऑन द कॉन्ट्ररी, आपके माइंड में 20-25 साल पहले भी ऐसा नहीं था कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर सिर्फ और सिर्फ IIT ही चाहिए, राइट? तो वाज इट समथिंग डिफरेंट इन योर लाइफ जो अभी बच्चों में शायद नहीं हो? अभी बच्चों में क्या है क्या नहीं है मुझे पता नहीं. But yeah, I mean, I was fortunate enough to find my spiritual path early on. Okay. Or to be perfectly honest, my spiritual path found me, and I was fortunate that way. I did not find my path. The path found me. That's it. I guess so. That gave me a grounding in a spiritual sense, in a sense that money is something but very little. It is something, but it is
not even close to, I guess, 10-15% of life. So I had that grounding early on. And because of that grounding, I could see that a good, well-paying job, landing a well-paying job through IIT does not mean much. Life is lived within. It is lived in our heart, in our mind. That's where we live. We don't really live in a house. We live in our minds. We live in our hearts. Right. So yeah, I guess that grounding helped me stay balanced. Not only during my preparation for IIT, but in IIT and after IIT. आई थिंक आई हैव अ बिग क्वेश्चन हियर. देखिए, क्योंकि मैं अगेन बच्चों से जब मिल रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी मेडिटेशन आदि तो करते हैं. स्पिरिचुअल पाथ हालांकि सबका अलग अलग होगा. जो आप एक एक व्यक्ति हैं वो बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है फॉर एवरीबडी. सो जब बच्चों को IIT बनाने का एक गोल होता है उनके माइंड में, पेरेंट्स का भी होता है, तो अक्सर उन्हें भी सजेस्ट किया जाता है कि हाँ, अपने माइंड को काम डाउन करने के लिए मे बी मेडिटेशन कर लो थोड़ी देर. तो यानी गोल अभी भी IITian बनने का ही है या डॉक्टर बनने का ही है, और फिर मेडिटेशन फॉलो करता है. ओके, ये मैं इसलिए भी जिक्र कर रही हूँ कि इससे आपकी लाइफ का इंटेंट चेंज हो जाता है. जैसे आपने कहा कि आप यहाँ पर IITian बनने नहीं आए थे, लेकिन आपकी प्रैक्टिस ने, आपकी स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग ने आपकी मदद की कि आप IITian बन गए. इसे नॉर्मल बच्चों के लिए एक्सप्लेन कर पाएंगे? क्योंकि देखिए, 11th क्लास में आपका स्पिरिचुअल पाथ पर होना कई लोगों के लिए मैसेज देता है कि अरे, तो फिर तो आप लाइफ में कुछ और चाहोगे ही नहीं ना. मनी की ओर भी आपको पता है कि हाँ, ये कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता है. तो क्या ये आपका गोल के प्रति जो कमिटमेंट होता है वो कम कर देता है? So yeah, it seems like there are a lot of questions and sub questions in that one thing. Following a spiritual path does not mean being realized, right? So being realized is a state which I can't even imagine what it is. But all of us, as people, as human beings, we have wants, we have needs, we have desires, we have ambitions, goals, dreams, whatever. The spiritual path helps us to put things in perspective. Right. Very true. It's perfectly fine to have all these ambitions and goals, and there's absolutely nothing wrong with those. It's part and parcel of being a human. It just helps us put things in a bigger picture. Right. What is life about, and how do my goals and dreams fit in that bigger picture of life? And even if a particular ambition is not fulfilled, it does not matter in big picture. In the big picture, it still is immaterial. Ultimately, what do we want? As people, we don't want money. If I told you, I'll give you $10 million right now, but you will be miserable for the rest of your life. I don't want it. Exactly. We don't want money. Right. What we really want is happiness. What we want is fulfillment, peace, joy, love. Right. That is what we want. And if we can have all of that without having money, that's what we are going to choose. If we have money plus misery all the time, we are never going to choose misery and money. Because money is not the goal. Right. We imagine that money will bring these things. Very true. Right. But that's just our imagination. And the fact of the matter is that wealthy people are the more miserable ones. If you compare people without wealth and the people with wealth, on an average, the wealthier a person is, the more miserable the person is. ऐसा ना हो कि बच्चे अपने पेरेंट्स से कहे, गौरव सर ने कहा है कि ना पैसा ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, तो मम्मी पापा हमें IIT करना क्यों है या फिर क्यों मेडिकल की लाइन में जाना है. इसे इस स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में समझाएं, क्या सोचना चाहिए, क्या एक बदलाव अपने थॉट में लाएं दैट कैन हेल्प देम अचीव
what they are looking for. लेकिन वही जो आपने कहा in a bigger perspective. Anyone who's doing anything useful is going to be successful. Right. Will have enough funds to, to live a decent life, a good life. Right? So being useful to other people, being serviceful to other people, that is the goal. And in pursuit of that goal, money automatically follows. Right. In pursuit of money will you will be able to achieve money, but you may lose sight of what the actual goal was. The actual goal was to be of help to other people. That's where we derive satisfaction from in life. Right. Making a lot of money without ever having touched anybody's life, made positive difference in anybody's life, it's not fulfilling. It doesn't, I guess for some people it still may be, it may feel fulfilling for at least for some time, but in the long term I don't think it will. Right. Right. Actually there is a thought, एक विचार आया था मन में, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ. वो ये कि जैसे आपने कहा कि बच्चे मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, द गोल इज टू अचीव सम कामनेस ऑफ माइंड टू हेल्प इन स्टडीज, Right. for better retention, better memory, and so on. And I feel like it's perfectly fine. Yeah, there's absolutely nothing wrong with it. But it's not necessarily the spiritual aspect of things. This meditation is, if this meditation is performed only in the pursuit of mental efficiency, then it is still it is still driven by a goal, a certain desire कि I meditate so that I can be in IIT, right? And that is very similar to what our parents used to do, at least what my parents used to do, कि भाई ये मंत्र का जाप करो तो फल की प्राप्ति हो जाएगी, तुम ये पाठ करो, रोज़ करो तो फल की प्राप्ति हो जाएगी. तो इंस्टेड ऑफ नाउ chanting Durga Saptashati or other shlokas and all, it's the trend is meditation. Right. But the underlying principle is the same कि भाई एक गोल है, उस गोल की प्राप्ति के लिए पहले मंत्र जाप करते थे, अब मेडिटेशन करते हैं. So that does not fundamentally change the approach, right? It's fundamentally still the same thing. The tools are different. Instead of mantra, now it is meditation. And mantra jap also improved concentration, right? Meditation also improves concentration. But it does not change the attitude with which we approach life, with which we approach our goal. The attitude is still, the same attitude. और ऑफ कोर्स सर जो कह रहे हैं वो ये है कि हमें उस एटीट्यूड में चेंज लाने की ज़रूरत है. एंड दैट क्योंकि आपने ये ऑलरेडी लाइफ में अचीव भी किया है ना. 11th क्लास आपको ऑलरेडी अपना स्पिरिचुअल पाथ मिल गया था, स्पिरिचुअल पाथ को आप मिल गए थे, आप IITian हुए और फिर उसके बाद अभी आप बाहर सेटल्ड हैं. अगेन मैं इन दोनों चीज़ों का जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि शायद एक स्टूडेंट के माइंड में इन दोनों चीज़ों को भी लेकर बहुत बड़ा इन्फैचुएशन है, राइट? आप तो क्योंकि उसे जी रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपके लिए शायद वो अब इतनी बड़ी बात नहीं रही होगी. हालांकि आपने कहा कि आप पहले भी उस चीज़ के पीछे नहीं थे कि नहीं IIT नहीं बनना है या फिर बाहर ही सेटल होना है. बट करंटली जो बच्चा हमें देख रहा है, आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड गोल ओरिएंटेड लाइफ है. आपको लगता है कि हाँ इस तरीके से करेंगे तो ये मिल जाना चाहिए, और शायद वो हमारे इस कॉन्वर्सेशन में भी वही ढूंढना चाह रहे होंगे कि ऐसा करें तो ऐसा हो जाएगा. पर आपका पाथ बहुत क्लियर है, बड़ा पर्सपेक्टिव है. फिर आपने क्या क्या अचीव किया जिसके थ्रू बच्चे ये समझ पाए कि लाइफ में बड़ी चीज़ें करने के लिए वो बड़ा पर्सपेक्टिव चाहिए. बड़ी चीज़ें तो या मैं कहूँ कि फॉलो करती जाएंगी, दैट पर्सपेक्टिव शुड बी राइट. तो क्या क्या अचीव हुआ जो आई एम श्योर आप स्वयं बताना नहीं चाहेंगे, बट जस्ट फॉर द स्टूडेंट्स. So goal oriented activities, I mean human nature has been goal oriented, but there's a difference in attitude. Even when when we approach our goals, the attitude or the healthy attitude, at least according to what I feel, is ki the goal is not in my hand. Okay. What is in my hand is only the effort.
whether I reach the goal or not is not in my hand. There are umpteen different factors which influence whether I will ever be able to reach that goal or not. Umpteen factors out of my control. The only thing in my control is my effort. So we can have a goal oriented life is perfectly fine, and probably that's how it should be. I mean, we talk about what is the goal of life itself, right? So if we are pursuing the goal of life, then yeah, there's a goal oriented approach. But whether we meet that goal or not, that is not in our hand. Whether we make an effort towards it or not, that is in our hands. Right. And as long as we are making an effort towards that goal, I think we should be just happy about that. You're making it so simple. हालांकि बच्चे सोच रहे होंगे कि इतना सिंपल कैसे हो सकता है, बट आई अंडरस्टैंड आपके केस में, क्योंकि बहुत यंग ही आपने अपनी चीज़ों को सॉर्ट कर लिया था. आई एम श्योर स्पिरिचुअल पाथ में भी आगे भी बहुत सारी लर्निंग्स होती हैं और समय समय पर होती है, तो हमें भी समझ में आता अच्छा हम इसके बारे में और ना समझ थे, राइट, पुराना कुछ. कमिंग बैक टू द स्टूडेंट लाइफ, क्योंकि जब IIT यानी कि मैं आपकी कॉलेज डेज की बात करूं, सो व्हाट मेड यू गो टू द न्यूरो साइंस? इनफैक्ट एक टाइम होता है जब आपको समझ में आता है कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ. आपने क्योंकि ये मेंशन किया कि आप IIT नहीं बनना चाहते थे, बट देयर वर अ फ्यू थिंग्स दैट यू एंजॉयड, दैट यू लव्ड, और ऑफ कोर्स साइंस के प्रति प्रेम आपको अपने करंट सिचुएशन में भी बेहतर बना देता है, प्रोफेशनली भी एंड पर्सनली ऑल्सो. आई थिंक एज फार एज आई हैव सीन यू सी द थिंग्स इन अ वेरी डिफरेंट मैनर दैन आई सी मोस्ट ऑफ द यूजुअल पीपल डूइंग इट. तो अगेन द क्वेश्चन इज कि आपने अपने आप को कैसे जाना कि मुझे मेरी स्टडीज़ में ये पसंद है ना, क्योंकि हम जब बच्चों की बात करें वो भी अपनी एक फील्ड चूज़ कर रहे होते हैं. तो व्हाट वाज दैट? स्टडीज़ में मुझे क्या पसंद है ये मैंने कैसे जाना? आई थिंक आई लव्ड फिजिक्स बिकॉज फिजिक्स टोल्ड मी what is possible and what is not possible. Okay. It helped me distinguish superstition from reality. Okay, great. कि what is possible and what is not possible, physics tells me that clearly. If it is according to physics impossible, then I will not believe in whatever people say. That's superstition. So I loved physics because of its ability to discern between truth and false. And I loved biology because of its just mind-blowing thing. This piece of goo, which is a cell, it moves and lives and reproduces. It's just the smartest piece of technology that ever existed. Right. We cannot even come close to creating what a single living organism does. So that's how, I was always amazed by how intelligent our systems are as a human body, right? Even a single cell. I was just amazed by how smart these things are. So kaise banaye, what is life? So I think these are the two things that drove my interest in physics and biology. And I was very happy that I could do my PhD in biophysics, which is studying the physics of biological systems. So मैं सिर्फ इमेजिन कर पा रही हूँ. Yeah. So yeah, that's how that's how I came to know कि these are the subjects I like because they're just mind blowing. Right. अच्छा, एक बात और समझाएं, क्योंकि आपने ये जिक्र पहले ऑफ एयर किया था कि मतलब जिस समय आप IIT हुए उस वक्त मल्टीनेशनल्स इंडिया में आती नहीं थी, राइट? तो जॉब को अप्रोच करने का, इनफैक्ट आप अब्रॉड हैं, यहाँ है, वो एक तरीका बहुत अलग था. इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उनके लिए क्या कहेंगे, क्या सिचुएशन तब थी? एंड बीइंग दैट पर्सन हु लव्स द सब्जेक्ट, बाहर ज़्यादा बेहतर एनवायरनमेंट है या फिर इंडिया में है, क्या कहेंगे? Environment in the sense job environment, work environment. Job, research, everything. Well, research
is definitely much better in the US. Okay. Yeah, research environment, research facilities, quality of instruments, scientists, availability of funds is way better in the US than in India, for sure, no doubt about that. um, वर्क वाइज या आई मीन इंडिया में भी अच्छी कंपनीज आ गई हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई हैं इंडिया में. स्टार्टअप्स का सीन ग्रो हो रहा है. वी एज इंडियंस हैव स्टार्टेड बिल्डिंग कंपनीज इन द लास्ट डेकेड और सो. सो या आई मीन अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में भी हैं अच्छी, बाहर भी हैं. So should somebody infatuate about living outside? Because आपने कहा research no doubt बाहर ज़्यादा बेहतर है ना. ऑन द कॉन्ट्री कंपनीज हमारे यहाँ पर भी आ रही है, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ. उनके लिए ऐसा है बाहर सेटल हो जाना, राइट. आज भी मैं मानती हूँ थोड़ा कम हो गया होगा, पर है, इनफ है. देयर दैट थॉट कि अरे मतलब पढ़ लिख कर बढ़िया IIT और बन के रिसर्च और करके हम बाहर सेटल हो गए. तो क्या वो इन्फैचुएशन सही होगा? रादर मैं पूछूंगी कि इज़ द लाइफ आउटसाइड अ बिट ओवररेटेड? मैं कुछ अपना बॉलीवुड का एक वो डायलॉग मारूंगा कि प्यार किया नहीं जाता हो जाता है. वैसे इन्फैचुएशन किया नहीं जाता हो जाता है. राइट. तो वो इन्फैचुएशन हो जाता है, नेचुरल है. लगता है ग्रास ऑलवेज सीम्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड. ट्रू. तो I don't think there's anything wrong with at least exploring life abroad. राइट, कि बाहर लोग कैसे जीते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसा कल्चर है, कैसा लाइफस्टाइल है, कैसी एजुकेशन है बाहर, राइट. कैसी पब्लिक सिस्टम्स हैं, कैसे उनकी गवर्नमेंट कैसे काम करती है, उनके लॉज कैसे, ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना बनता है. राइट. So to go abroad and live life in another country, another environment, another climate, another culture is very enriching for sure. But to imagine that life is better than life in India, it's not true for everybody. For some people, it may actually be true. For some people, it may not be true. It's for them to go experience it and realize it for themselves. Is it actually working out for me? मैं आ तो गया बाहर, but is it worth it? Is it worth staying away from my close friends, my relatives, my parents? Right. For long durations of time. And if it doesn't feel right, come back. You have the experience. You have been abroad. You've seen other cultures, other ways of working and everything. Bring back that experience back to your own country. That will enrich your work here. You can bring best practices from other places into India and make India a better place. So that is also possible. Wonderful. So when I'm listening to you, I definitely feel it's a more enriched approach towards life in general. अच्छा, मैं ये नहीं कह सकती ये आपके IIT होने की वजह से है, या फिर आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में स्ट्रांग होने की वजह से, या फिर बाहर रहने की वजह से, बट दिस समथिंग दैट आई एम लाइकिंग. एंड इन फैक्ट आई विल से कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि आपके कॉलेज में भी, यानी ऑफ कोर्स यू बीन एन IIT, तो मैं जितने IIT से मिलती हूँ, कई बार मुझे लगता है कि उनका जो अप्रोच है टुवर्ड्स टेकिंग एनी प्रॉब्लम इनटू कंसिडरेशन, वो कंपैरेटिवली ओपन माइंडेड होता है ना. आई डोंट नो वेदर यू अग्री टू दिस और नॉट. इन फैक्ट माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू अग्री टू दिस? क्योंकि क्या आपका वो कॉलेज जो है वो आपको लिटरली कुछ बेहतर बना देता है? एंड डज दैट मेक अ रियल बिग डिफरेंस? क्योंकि देखिए, जो बच्चा IIT में जा पाएगा वो तो बहुत अच्छी बात है. जो अगर नहीं जा पाएगा, क्या उसको इस बारे में लिटरली लाइफ का दुख मनाने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं. या IIT में नहीं हुआ, इसका दुख की कोई बात ही नहीं है इसमें. इट्स बाय डिज़ाइन ओनली 1 or 2% ऑफ द एप्लीकेंट्स will get into IIT. That's by design. इसका मतलब ये है कि भाई 98% should be sad जिन्होंने ट्राई किया नहीं हुआ. तो obviously not, absolutely not. IITs, yeah, they have some facilities which are better than other colleges, some faculty which are better than other colleges. The alumni network is probably better placed. I'm not sure. I don't know. I don't have the facts on this. But
बट इट डज नॉट मीन कि अगर IIT में नहीं हुआ तो अब लाइफ में कुछ नहीं कर सकते या लाइफ में कुछ मीनिंग नहीं रहा. Fact of the matter is that lot of people who have achieved a lot of good things in the world, वर्ल्ड छोड़ो, इंडियन पॉपुलेशन की बात करो, they are not from IIT, right? So yeah, getting into IIT is not the goal of life. It does not even mean that you're going to be contributing positively to society. It's not a big deal. IIT is not be all and all, by no means. You're so kind while you say so. I'm sure, क्योंकि मैं बच्चों को जो सुन रहे होंगे उनके लिए ऐसा है कि सर तो IITian है ना, इसलिए ये बात कह सकते हैं. बट कैन आई से इट व्हेन आई एम नॉट एन IITian? ऑफ कोर्स आई एम नॉट. मैं तो थी कॉमर्स फील्ड से, लेकिन मैं आपकी बात बिल्कुल समझ पा रही हूँ. बट ओवरऑल द रीज़न वाई यू आर हेयर इज़ क्योंकि आपने कुछ अचीव कर लिया, आप जानते भी हैं कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है. तो मैं ये कहना चाहूँगा कि the people I have worked with, majority of the people I have worked with are not from IIT. Okay. And Facts. I know that they are just as smart, as intelligent, as accomplished as any IITian is on an average. Right. So yeah, I went to IIT, but I worked with people not from IIT, smarter than me, better than me in many ways. Okay. So yeah, there you go. You don't have to be an IITian to be good. But does being an IITian help? Probably, yeah. It's a brand recognition. It's a brand that once you get that brand stamped on your face, then it I'm helps literally a little bit. imagining, yes, there's no face. I'm sure it helps a little bit. That brand recognition helps a little bit. But in terms of raw ability, I don't think there is a lot of difference. Probably there is just no difference at all. Right. In fact, sometimes being an IITian can and does hurt people. Acha, this is something new. Because Huh. what happens sometimes is, and it happened to me, although not in IIT but much later, a sense of overconfidence अच्छा comes up. ओके. कि भाई मैं तो IIT से हूँ, मैं तो स्टैनफोर्ड भी गया था, तो मैं तो गॉड ही होऊंगा. मैं तो जिस चीज़ को छू दूंगा वो तो सोना ही हो जाएगा. मतलब माई मियर प्रेजेंस इन द रूम शुड बी इनफ फॉर दीज पीपल टू पे मी millions of dollars फॉर. मैं आपके साथ बैठा हूँ बस इसी के लिए, तो मुझे $100 million दे दो बस, क्यों? तो आई गेस माई पॉइंट इज दैट it can get to our heads. Right? Being an IITian can get to our heads, and it does do that to some people, and it then hampers their ability to see things as they really are. It hampers their ability to be in touch with reality, what the ground truth is. So yeah, it can be detrimental if we let it get to our heads. Then being an IITian is going to be worse off than being a non-IITian. You're so kind. Thank you for sharing this. तो finally summing it up, लाइफ में ना बहुत बड़ी चीज़ें भी हो सकती है except being an IITian, right? आपने बाहर की लाइफ भी देखी है. तो बड़े चैलेंजेस कौन से हैं जो एक स्टूडेंट ये देख रहा हो उससे फेस करने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए, या फिर ये कहिए कि लाइफ के प्रति क्या एटीट्यूड होना चाहिए? ये तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है. इसके लिए तो आपको किसी संत महात्मा सदगुरु से पूछना चाहिए ये सवाल. तो आप में भी उन्हीं का अंश है. आई फील दैट आवर कमिंग जनरेशन, their tests are going to be different from ours. Our parents had more physical tests, more material tests. Right. And we are in a transitory phase where the tests are transitioning more to psychological and mental tests. And that's where majority of the challenges will be.
materially the world is doing better, more technology, more efficiency, starvation is going down, and so on. Of course, there are places in the world where it's still a problem. Hunger is still a problem. Food insecurity is still a problem. But overall, if you look at the trend of the world, it has moved positively in the material dimension, right? More prosperity, more material prosperity. The tests are more going to be mental and emotional going forward. True. सो किस तरह के चैलेंजेस के लिए तैयार करना चाहिए अपने आप को, बच्चों को? एग्जैक्टली दैट, टू बी ग्राउंडेड, टू स्टे इन टच with their inner self, and that is the way to avoid, or at least, if not avoid, at least navigate the psychological challenges that the society is going to face in the coming years. I mean, just to be happy, to be healthy, that is the holy grail. Yeah, very well said. I think we can talk for hours, है ना? पर अभी के लिए इस संवाद पर विराम देते हैं. बहुत शुक्रिया सर for making it to the conversation today, to the studio, and to be able to talk what you have experienced in your life. I'm sure ये students को बहुत help करेगा. Thank you. Well, I'm just these are just my 2 cents, right? I don't know if it will help anybody or not, but I shared what I felt, what I experienced, and I hope that my experience helps someone. It will. Okay. Drop a comment अगर आपको इस कॉन्वर्सेशन से कुछ सीखने को मिला हो तो, और बहुत कुछ सीखने को मिला हो तो लिखना ही है. Thank you so much for watching. अभी के लिए इतना ही. बहुत शुक्रिया. Take care. Thank you.